first ଆମେ ଜାଣିବା what is Terraform, then we'll see why we need Terraform to learn, and then we'll do some practices hands-on after. So there are a few topics I'm going to cover, like जो कोर्स भीतर अच्छी फर्स्ट ओवरव्यू डिस्कशन करबा तापर टेराफॉर्म इंट्रोडक्शन टीनेज इंस्टॉलेशंस किसी सेटअप्स लिखबा वेरिएबल्स सॉफ्टवेयर प्रोविजनिंग एट्रिब्यूट्स राइट डेटा सोर्स टेम्पलेट्स मॉड्यूल्स तो हमें ये पर्टिकुलर पार्ट्स जति की रहउची हमरो कोर्स कंटेंट रे रखुची बेसिक पार्ट्स एति की हमें कवर करबा एडवांस पार्ट को हमें जीवानी कारण एडवांस पार्ट विल टेक मोर टाइम टू लर्न इट बट स्टिल मु तुमको किछि जेमति की रिमोट स्टेट लॉग रिमोट बैकएंड आ विषय बतई देबी मॉड्यूल रो टिके बेसिक्स ऊपर बतई देबी ओके तो फंक्शंस आ विषय किछिटा बतई देबी तापर हमें नहीं तो जहां भी पढ़ा हो राइट टेराफॉर्म रे यू शुड डू इमीडिएट प्रैक्टिस तुम जदि इमीडिएटली प्रैक्टिस न करूछ देन यू विल फॉरगेट डेफिनेटली ओके सो फर्स्ट थिंग इज let's understand what is Terraform and why we need it. Okay. So before moving to Terraform, let's understand what is ISC. So ISC is nothing but the infrastructure as code. Infrastructure as code. What is that? It is actually ISC is the managing and provisioning of infrastructure through code instead of through manual processes. Instead of through manual processes. So, मैं कौन कोड ना जहाँ भी हमें AWS से वर्तमान पर्यंत पढ़ी छे तो हमें जब हमें कौन सी गोटे सर्वर दरकार राइट बा कौन सी गोटे स्टोरेज दरकार तो हमें कौन करना AWS कंसोल को लॉगिन करी जाइकरी से पर्टिकुलर सर्विस टा हमें चूज करू सिलेक्ट करी क्रिएट करू राइट तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर आज कोड रे कौन करूचे इटा हमें ऑटोमेट करूचे जो मैनुअल प्रोसेस रे हमें लॉगिन करी ताको क्रिएट करूचे सेटा को हमें कौन करबा कोड द्वारा ताको हमें मेट करबा राइट So ISC is the managing and provisioning of infrastructure through code instead of through manual processes. So manual process जोटा हमें करूले ताकू हमें कौन करबा ना through ISC we can code it and automate it. Okay, सेते पे हमें ISC यूज करबा infrastructure as code यूज करबा. So Terraform is one of the ISC tool. Okay, so with ISC configuration files are created that contain your infrastructure specification. तो इस रे हम कोन करियो ना गोटे कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करिबा जोतरे के हमको जहा दरकार तार कंप्लीट इंफॉर्मेशन राइट जहा भी स्पेसिफिकेशंस हमको जहा जहा दरकार कंप्लीट डिटेल्स से फाइल रहइबो से फाइल टाको हम यूज करि के हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिबा which makes it easier to edit and distribute configurations. It also ensures that you provision the same environment every time. So, each particularly, so what it guarantees that whatever configuration file you write, right, the same thing can be reused multiple times. Every time you use to create the same environment, same infrastructure. बिकॉज इटा हमें कौन करछे ना कोड करी देइछे ऑलरेडी जो कोड हमें यूज करी करी इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करि पे हम गोटे सर्वर दरकार तो सही सर्वर पे जहां जहां हमको इंफ्रास्ट्रक्चर माने स्पेसिफिकेशंस दरकार हम सही स्पेसिफिकेशंस को गोटे फाइल रे रखि दबा तर हमको गोटे इंस्टेंस टाइप T2 मीडियम दरकार एतिकल सपोज 30 GB गीगाबाइट स्टोरेज दरकार or something हमको पर्टिकुलर किछि सिक्योरिटी ग्रुप दरकार पर्टिकुलर आईपी एड्रेस दरकार तो हमें सब जगह कौन करो गोटे फाइल भीतर रखी से फाइल टाको रन करियो तो एवरी टाइम वी रन दैट फाइल इट विल क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अस if the infrastructure already exists then it will ignore right if not then we can reuse that to provision infrastructures many environments
Okay, or same environments we can create. So automating infrastructure provisioning with ISC means that developers don't need to manually provision and manage servers, operating systems, storage, and the other infrastructure components each time they develop and deploy an applications. So जदि आम देखा जा तो जिते आम कौन यूज करुचे गोटे infrastructure. So what exactly the infrastructure means? आम जानचे infrastructure, right? Then IT infrastructure भितर, right? आम जो system कोनोसी प्रोजेक्ट आम यूज करुचे, right? तो सॉफ्टवेयर बनाउचे एप्लिकेशन बनाउचे ता पई गोटे एनवायरनमेंट दरकार, right? गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार. तो से इंफ्रास्ट्रक्चर भितर आम कोन रहबो? गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर आम करबा बनाइबो गेले ता भितर कोन फर्स्ट थिंग हला नेटवर्क, right? So network, right? हमर को टाइप रो नेटवर्क आम यूज करुचे, प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, जहाँ भी तुम इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ भी रिक्वायरमेंट तुम सिलेक्ट कल ता भितर हमर सर्वर, जहाँ भी सर्वर दरकार सर्वर नेलो, जहाँ भी स्टोरेज दरकार स्टोरेज नेलो, राइट? आउ हमर जहाँ भी पर्टिकुलर डेटाबेस हो, राइट? डीबी सिलेक्ट कल, राइट? फायरवॉल, एवरीथिंग तुम जहाँ भी दरकार तो गोटे सर्वर नेलो, तो से सर्वर जहाँ जहाँ कॉन्फ़िगरेशन तुमको दरकार तो मशीन नेले, राइट? जमती कि लैपटॉप हो बा कंप्यूटर हो जोड़े हम यूज करबा एप्लिकेशन को डिप्लॉय करबा. तो गोटे डेवलपर जते बळे गोटे डेवलप करछि एप्लिकेशन किछि कोड लिखुछि, से कोड रन करबा कोड डिप्लॉय करबा ताकू गोटे एनवायरनमेंट दरकार, राइट? ते एनवायरनमेंट दरकार. तो सही एनवायरनमेंट को हमें कोन करबा क्रिएट करबा. तो डेवलपर्स बेसिकली कोन करना मैनुअली लॉगिन करबा कोन कंसोल को. सपोज हम यूज करछे AWS, से कोन करबा AWS कंसोल को लॉगिन कला, लॉगिन करी मैनुअली सर्वर ताको एतिक सर्वर दरकार, एतिक स्टोरेज दरकार, एतिक डेटाबेस दरकार, तो से ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कला जा जा नेटवर्क दरकार, देन मैनुअली ट्रिगर कला एटा रन हैला, क्रिएट हैला गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर. तो सेटा को हमें कोन करबा ना गोटे फाइल रे कोन करबा जहाँ जहाँ हमको दरकार फाइल लिखि देले स्पेसिफिकेशंस हम दे देले. तो से स्पेसिफिकेशंस को हम जतबेले रन करबा से कोन करबा ना हम पई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दबो, राइट? तो इटा गला हमर इंफ्रास्ट्रक्चर आज कोड, तो हमें कोड लिखिले. तो Terraform is one of the ISC tool, is one of the ISC tool. Okay, Terraform is one of the ISC tool. So हम जानले Terraform कौन पे यूज होची to automate the infrastructure. The basic questions हमको दी पचारे जीवो. तो Terraform में काहे यूज करिबा to automate the infrastructure, right? So to provision the infrastructure automatically we need the Terraform. The Terraform रो advances कौन तार, right? The advantages ता हमें जानिबा. तो what is Terraform? Terraform is an infrastructure as code tool that allow you to build, change, and version infrastructure safely and efficiently. Okay, and that means we can safely or efficient way we can automate to create or provision infrastructure for us. Right? So it is a tool for building, changing, and managing the infrastructure in a safe and repeatable way. Kind of safe coach, हमें manually करले कौन होगा? That could be chances of errors, right? हमें किसी भी humans, we are humans, right? We can do mistakes. किसी भी mistake कई बार तो problem आसी पारे infrastructure create कला. बजट जटा हमें कोडिंग करी देथिबा ऑलरेडी कोड ही जाइथिबो तो सेटा सेफ हे जवा हम पाइ ना, राइट? किछि भूल हेते हमें इनिशियली टेस्टिंग फेज रे हम पाइ जिबा. तो दैट कोड कैन बी यूज्ड
repeated way and safe manners, right? In a safe way, we can use that. Anytime tame repeat kari paribo se code. It manages environment with a configuration language called is SQL. SQL HashiCorp configuration language. And Terraform is actually a tool which is created, or you can say developed by HashiCorp. HashiCorp is a company, right, which created this Terraform. HashiCorp Terraform. So HashiCorp configuration language, there's one language called SQL. So so we can automate our infrastructure creation and provisioning. Simple way, we can use Terraform to automate the infrastructure, to create and automate the infrastructure, right? Or to automate the infrastructure creation or provisioning. Simple way, we can answer it. Okay. तार डॉक्यूमेंटेशंस हमें देखिबा टेराफॉर्म रो डॉक्यूमेंटेशंस तमे बहुत इजी डॉक्यूमेंटेशंस रहउची तार हम जदी यूज करबी terraform.io. Okay, sorry, spelling mistake. Terraform.io. So this is the documentations. तो हम जंतरी आगरू कहिची बेसिकली जहाँ भी हमें तो कंदर क्लास करते हैं सब बड़े मुझे कोई कौन तो मैं जहाँ भी पढ़ू चो राइट जो टू भी बोलते तारा डॉक्यूमेंटेशंस थरोली पढ़ियो पढ़ियो तुम जब कौन से दिन से उड़े मास्टरी करिया वो चाहूँ चो then you should go through and read the documentations and do practice. तो हमें भी क्लास से कौन को हमें documentations पूरा पढ़िवा then it will take months of time to read all the documentations and go through. ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ତମକୁ ଜଷ୍ଟ ଗାଇଡ କରିଦେବି ତ କେମିତି ତମେ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ସ ଫଲୋ କରିବ ଆଉ କେମିତି ତମେ ଇଜିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି କରିପାରିବ ଓକେ ତମେ ଯଦି କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛ କୌଣସି କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛ ଫର ଟେରାଫର୍ମ ସପୋଜ ଟେରାଫର୍ମ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ସ ଦଉଛ ରାଇଟ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ଦବାକୁ ଯାଉଛ ଦେନ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦିସ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ସ ଡେଫିନେଟଲି 100% right to do well in the examination. So what is Terraform? Right, everything is there. So I mean thoroughly slowly one by another हमें move करिबा ओके तो तमे यूज करि परिबो hashicurve.io तुमको से डायरेक्टली ए पर्टिकुलर पेज को से नहीं जाउची तुमको राइट terraform.io रे तो तमे यूज करि परिबो hashicurve developer.hashicurve.com/terraform जेमदी terraform गोटे hashicurve रो टूल राइट hashicurve.com रो गोटे टूल होची terraform सेमदी hashicurve रो बहुत सारा अदर टूल्स भी अछि. Okay, fine. I'm slowly jiba janiba ta bisar. Next, I'm janiba how can details Terraform upre. So, what it does, it supports multiple platforms. It has hundreds of providers. It has hundreds of providers. Some providers kono ta bisar hame janiba. What is providers and how we are using these providers in Terraform. Okay, so कौन कहला ना supports multiple platforms support करुची hundreds of providers which होची multiple platforms एंटी की suppose हमें सीखुची AWS right तो मैं suppose कली तो मैं Azure ऊपर काम करेगा चाहूँचो GCP ऊपर पर different other cloud ऊपर काम करेगा पर different on premises कौन सी on other tools ऊपर काम करुचो GitHub or something तो तमें से particular platform will be coding kari paribo coding na Terraform that Terraform supports multiple platforms tame kichi bhi platform pai code kari paribo using Terraform. Okay, simple configuration language and faster learning curve. That's very simple language tame thore use kariyo mane it will be very easy to learn. Okay. Easy integrations with configuration management tool like Ansible. Ansible is just simply install करते बाकी कौन playbooks लिखितले task लिखितले Ansible hyphen playbook execute करके हमें playbook run कर देते right तो exactly same thing हमें use करिबा गोटे छोटो file.tf terraform configuration file रे हमारा जहाँ भी specifications दरकार जहाँ requirement हमें लिखि दबा ताको execute करबा तो से हम पे easily हो जाओ. Easily extensible with help of plugins. तमे चाहू जदि तार किछि एक्स्ट्रा
functionality use करिया पाई functionality, then you can go through and use the plugins. तो जेमती कि हमें हमरो Ansible रे भी हमें सब कोन plugins use करतले, modules use करतले, Jenkins रे हमें plugins use करी कि तो Jenkins रो functionality को हमें upgrade करूतले, right? Those things you can also use in Terraform, and it's free. The first thing is it's free, it's open source, so we can easily use. You can easily install in your um, laptop, any machines. You can easily install it. Okay, so there are lots of providers are there. Before moving to that, let's understand what are the available ISC tools in the market. Okay, so there are various types of tools. जोड़े हमें बतन पढ़िया जाउची Terraform. तो कहीं के Terraform ते पॉपुलर होची, कहीं के Terraform हमें सीखुचे, ता विषय में तुमको कही देबी. तो Terraform हमें जानले कोन is one of the ISC, like infrastructure as code tool. Okay, Terraform is one of the infrastructure as code tool, right? So ISC. So ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା ନା ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ Terraform various types ଯେମିତି ଅଛି AWS cloud formation, sorry, AWS cloud formation. AWS cloud formation is also one of the ISC, but it is native to AWS. It's actually a tool which is designed created by AWS. ତମେ ଯଦି specifically AWS ଉପରେ କାମ କରୁଛ, then you should go with AWS cloud formation, but AWS cloud formations is very native to the AWS, and it will not provide you that clarity or functionality whatever you need. Hit another tool, Ansible. We already know Ansible. We are basically using for configuration management and continuous deployment, right? We learned Ansible to do configuration management and continuous deployment. Still, Ansible has functionality to do the ISC role, infrastructure as code. It can be used to do the automations of the infrastructure. Okay, and there is other tools called Salt Stack, Safe, Puppet. There are many other tools in the market, but Terraform is more popular and widely used by many companies. Okay, many companies in the IT industry. That's why we are going to learn Terraform. So Terraform जानले हमें configuration management और infrastructure orchestration चला हमें Ansible तो जानले कौन हो, right? Configuration management tool, right? But infrastructure orchestration जोड़ी के हमारो infrastructure automations हमें करियल जाउचे, right? Infrastructure as code चला use करिके तो difference टा जाना ठीक है, तो तुम पे better होगा. तमें तो configuration management करूँचे कौन कुछ. What it does, it means that they are primarily designed to install and manage software on existing server. The configuration management हमें केतेबळे करिबा जेतेबळे आम पाखरे ऑलरेडी सर्वर अवेलेबल अच्छी, infrastructure available अच्छी, then we can go ahead and do the configuration management, because the configurations हमें केतेबळे configuration गोटे करिबा जेतेबळे आम पाखरे ऑलरेडी गोटे सर्वर थिबो तादरे हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिबा बा किछि फाइल मॉडिफाई करिबा सेटा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रे जाउची. तो तापे हमें कोन ऑलरेडी हमें देखि जे Ansible एटा केनते हमें यूज करि परिबा. तो Ansible, Safe, Puppet ये सब कोन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स प्राइमरीली यूज कराउची सेति पय, but still companies are using to do the ISC. Terraform and cloud formations are the infrastructure automation tools. They're specifically designed to do the infrastructure automation, which basically means they can provision the servers and infrastructures. तो तुमको किसी infrastructure provision करियर अच्छी, create करियर अच्छी, right? बा provision करियर अच्छी, तो बस server create करियर अच्छी, हमें easily we can use in Terraform to do that. तमें
सर्वर प्रोविजन कर परिबा यूजिंग Terraform and तापरे Ansible सेफ यूज कर परिबा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट पाई तो डेवऑप्स लाइफ साइकिल जतो हम पढी थिले जानि थिले राइट काम सेठी देखि थिले कोन CI/CD पार्ट देखि थिले कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट भितरे हमर रहि जाउची कोन infrastructure automation रहुची जोटा कि infrastructure provisioning part रहुची by using the Terraform. Okay, let me tell you. So you'll be thinking like हमें जदि Terraform use करिवे right Jenkins आउ Ansible भितर right CI/CD भितर हमें यूज करिवे कंदर Terraform हमें infrastructure के तो तम माइंड रास्तु रे हम सते हम सब बेले हमको सर्वर दरकारी राइट तो हमको तो सब बेले सर्वर दरकार नहीं ना सर्वर क्रिएशन इज ओनली वंस तमे थोड़े सर्वर क्रिएट कर दलो बाकी configuration management or continuous deployment it will be continuously those are continuous thing right configuration management continuous integrations deployment those are the continuous thing we will be doing continuously those things okay that's why those tools will be used frequently every time we are going to use it with Terraform whenever we need to provision something जदि किसी सर्वर क्रिएट करियर अछि then we should go ahead and execute the Terraform तो तमको देन आमे थरे तो क्रिएट करै छी मैनुअली करि परिबा yes you can do manually but तम सपोज 15 टा सर्वर क्रिएट करियर अछि different environment then think that केते टाइम तमको लागिवो प्रोविजन करिबा पे कण मैनुअली तमे जीवो 15 टा सर्वर से वन बाय वन क्रिएट करि चलिथिबो different environment instead what we can do just write the code execute it code will be written already you have to just execute it if your code is already written if not then you have to write it once use it multiple times simple Terraform we need to provision the servers or infrastructure automatically using Terraform clear केबे भी डाउट जेमति तमरो आसीबा न दरकार इंटरव्यू देला बेला कंफ्यूज जमा हबन and you should be very clear whatever you are learning right you should be very because you are going to like showcase right you have experience you have worked already then तमे कोन करे पड़े तुम से लेवल रो तुमको तमे आंसर द पे रेडी थिबा दरकार तुम गोटे पचार देले क्वेश्चंस देन तमे जदी माने continuous integration continuous deployment are you using Terraform regularly you can say no we are not using regularly but sometimes whenever we need to provision something we execute those Terraform configurations files we write it and we execute it we do modify something because we not immediately write it something is already been written and we do change it and execute it simple way right but there is infrastructure engineer is different देखो गजी ना DevOps आउ प्लेटफॉर्म इंजीनियर भीतर डिफरेंस अछि तमे केबे भी मिक्स करबनी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर बा क्लाउड इंजीनियर क्लाउड इन और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर एंड डेवऑप्स इंजीनियर बोथ आर डिफरेंट Terraform जे कि क्लाउड इंजीनियर प्लेटफॉर्म रे काम करूची बेसिकली तो समाने कोन करचंती Terraform सिकुचंती और Terraform ऊपर काम करते कारण रेगुलर तांकर कोन इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर समाने काम करूचंती those who maintains the infrastructure manages the infrastructure they will be regularly using the Terraform तो आज DevOps engineer तुम कहीं दरकार yes तुमको दरकार एथि पई तुम गोटे सर्वर क्रिएट करूचो ऑटोमेट जेहेतु तुम करचो CI/CD बन करचो डिफरेंट टूल्स यूज करूचो yes तुम जानिया दरकार जे कोठी तुमको सर्वर दरकार केतबल दरकार को एनवायरनमेंट दरकार तो एटलीस्ट तुम तक यूज करी create kari paribo one time twice thrice can use it well most of the companies kon hochi na different infrastructure engineers thanti cloud engineers infrastructure team gote tanga pai thanti jota ki DevOps engineer jaha bi requirement hela semane procure kari provision kari diyanti
और तुम यदि गोटे स्टार्टअप रे जॉइन कल कोनोसी छोटो कंपनी रे तो यू आर द बॉस, राइट? यू आर ऑल इन वन इन DevOps. You have to do everything. तमे ही क्रिएटेड, तमे ही टेस्टेड, तमे ही सब किछि मॉडिफायर, एवरीथिंग यू आर, राइट? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଟା ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। କ୍ଲିୟର? ଓକେ। ASC and configuration management, तर जस्ट एग्जांपल्स हम देखिदवा। तो ता पूर्व देखो एटा हम जस्ट बतै दोछि, तापर हमें जिबा प्रोवाइडर्स विषय इंस्टॉलेशन शिखिबा, तापर प्रोवाइडर्स कोन विषय जानिबा। तो आईएससी हम यूज करूचे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डिफरेंस कोन होछि। तो फर्स्ट कोन कले ना हमें गोटे Terraform TF फाइल लिखि देले, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखि देले TF फाइल, तार एक्सटेंशन रोच .tf। मन देखो तमे जहां भी फाइल ना दोच ता सहित तार रहइबो .tf फाइल एक्सटेंशंस। ओके, जेमति कि हमर आंसबल हमें कोन लिखुतले, आंसबल रे .yaml थिला, जोटा कि हम YAML लैंग्वेज यूज करथले। एठी हमें SQL यूज करछ, हैसिकप configuration language, right? .tf सेमति जेनकिंस रे हमें कोन यूज करछे, it has no extensions, we are using pipeline scripts, right? Declarative way or scripted way. Two ways we can write the scripts, declarative way and scripted way. तो declarative way रे हम हिसाब रे हमें pipeline script लिखुतले। देखो Ansible पाइन different way we are writing the code, Jenkins way different way we are writing the code, though different way, but still these are very simple and easy to use, easy to write. तुमको जानियार अछि केमती राइट करियार अछि, ऑलरेडी हमें सिखिचे जेनकिंस आउ Ansible पाइन। तो हमें Terraform पाइन भी सीधा सिखिबा। ओके, फर्स्ट हमें कोन करबा, गोटे धर सपोज हमें नुवा सर्वर गोटे हमें क्रिएट करछे, new server.tf गोटे नै गेली नाम दे देछि। रह गेला पर क्रिएट कर एग्जीक्यूट जतो हम करूछि कोन होछ ना Terraform तो हमें यूज करूछि टूल। तो से कोन कोछ ना Terraform रे जहां हमें लिखितिबा सही हिसाब रे से पर्टिकुलर जहां भी टूल हमें यूज करिबा, माने जो प्रोवाइडर यूज करिबा, जो प्लेटफॉर्म यूज करिबा सेटा कनेक्ट करी, सपोज AWS हम यूज करछे, AWS को कनेक्ट करी केमती कनेक्ट हबो, केमती कोन करबो डिटेल्स रे हम जानिबा। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। तो से हिसाब रे हम सपोज सर्वर क्रिएट करछे, गोटे कोन से EC2 इंस्टेंस गोटे क्रिएट करिवो। सो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करला पर से तार सपोज रन हैला पर EC2 इंस्टेंस रे इंफॉर्मेशन ता से जो Terraform कुछ EC2 रन हैला तार डिटेल्स ता कोन से Ansible को दे दबो। Ansible दे देला पर कोन Ansible एग्जीक्यूट करिवो कोन configuration management and continuous deployment we can do using Ansible. So these things, the entire flow, right, we can automate it. हम तुम जस्ट बुझोची कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट केतबेले करिवो आईएससी हमें कोन कले जस्ट गोटे फाइल रे हमर गोटे न्यू सर्वर दरकार थला, जोटा कि हमर प्रोविजन कले। तो Terraform यूज हैला प्रोविजन करया पई, Terraform क्रिएट कर देला गोटे सर्वर, क्रिएट करी करी तार इंफॉर्मेशन Ansible को दे देला। Ansible कोन हला एग्जीक्यूट करी तार जहां भी दरकार। तो मते गोटे सर्वर क्रिएट करे मु चाहूची से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करबा पई, then Ansible will go through that and install the software. बुझिपाल सेटा पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होछ, राइट? तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत इजी। तो मुझे लिखी जे एटा जस्ट हमर लिनक्स प्लेटफॉर्म पे, इवन इन विंडोज यू कैन डू इट वेरी इजीली आल्सो। तो हमें केम कोन करबा केम इजीली, तो Terraform जेमती कली Terraform पे Terraform डॉक्यूमेंटेशंस को जीवो। Terraform आसी गला परे हमर डाउनलोड ऑप्शंस देखिबो, राइट? Let's click on Terraform. Where is Terraform? Terraform downloaded. Documentations, provider, install. Okay, so install different operating systems. Mac OS, Windows, Linux, FreeBSD, OpenBSD, Solaris, and all. Okay, so बहुत simple अच्छी installations तो Mac OS पे just command use करिवो। Suppose Linux हमें use करिवो, Linux पे ये particular तो Linux रे एठी कोन कोछ ना different versions अच्छी तमे binary directly download करी execute करि परिवो। Ubuntu पे ये command use करिवो, CentOS पे ये command use करि परिवो, Fedora पे Amazon Linux पे भी देजी कोन use करि परिवो, right? तो Amazon Linux पे very simple तमे हमें कोन करबा एटा use करि करि installations करिवो, राइट? तो मु तुम पे जस्ट लिंक तुमको पिंग कर दूची।
जस्ट हैंडी रखी था तो तुम पिन कर देली तो यहाँ सिंपल कौन कर तुम टास्क दूची follow these documentations and do installations. This is the Linux installation. Similarly, Windows रे भी तुम install करी परिबो चाहिए तुम मशीन रे जदी निजे लैपटॉप रे जदी install करिया को चाहूछ देन install करी परिबो तले Amazon Linux चाहिए तुम install करो. Okay, Windows को Windows installations just binary download करिबो बस that's all. Okay, तो simply તમે ચાહો છો ଯଦି ଆଉ କିଛି ମାନେ ଯେକୌଣସି environment so go through these documentations completely and you can install this. Okay, fine. Installations clear. તમે installation Linux ର installations କରିବ next ତମ task ତାପରେ ଆମେ provider ଉପରେ ଜାଣିବା. Okay, what is provider? ତମେ ତ Terraform ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ISE ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, right? What is this infrastructure as code? What is Terraform? Why we need to use Terraform? क्लियर पूरा तबे मैं टेराफॉर्म विषय जानबा टेराफॉर्म रो कौन डिटेल्स रे तार टॉपिक्स कंप्लीटली हमें जानबा टेराफॉर्म रो डिफरेंट टॉपिक्स रोची जेमति प्रोवाइडर्स रो रोची राइट रिसोर्सेस सब डिटेल्स हमें जाने धीरे धीरे कि प्रोवाइडर कौन रोची प्रोवाइडर्स कौन हमें जेमति जानले प्रोवाइडर राइट सर्विस प्रोवाइडर जे सर्विस प्रोवाइड करची राइट cloud service provider who provides the cloud services. Perfect. तो सेमती हमें तो Terraform यूज करूचे Terraform रो यूज कला बले जेमति कहली फर्स्ट पॉइंट हम देखते लेको ना it can run for multi platforms, right? Multiple providers. The different providers हमारा cloud providers जेमति AWS, Azure, right? Google Cloud, Alibaba, GitHub, Kubernetes जहाँ भी तुम यूज करे अपने चाहो प्लेटफॉर्म यूज करेगा. The Terraform supports multiple providers. So first, let's understand what is provider. Provider allows Terraform to interact with cloud providers, SaaS provider, and other APIs. So provider would say nothing but would a kind of softwares. तमें कहीं बोले देखिए बोला हमें use करेगा कुछ जिब्बा है ठीक. तो हमें AWS use करते तो AWS रा particular तार provider would a package से दबो से package तक हमें use करी जोटा कि मॉड्यूल बा कहि पारे तार AWS प्रोवाइडर मॉड्यूल डागा हमर AWS प्रोवाइडर मॉड्यूल कहउछ राइट सेही फेटा गोटे कोन एप्लीकेशन ता बाइनरी ता तो सेटा यूज करी के हमें कोन Terraform रे सेटा ही यूज करिबा कनेक्ट करिबा पई AWS को सेमति Azure को कनेक्ट करिबा देन हमें Azure प्रोवाइडर यूज करिबा ओके so it interacts cloud providers providers allow Terraform to interact जेहेतु से प्रोवाइड करछि कोन गोटे बाइनरी गोटे एप्लीकेशन प्रोवाइड करिवो तो मैं यूज करिवो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी वांट टू लॉन्च वी हैव टू चूज द एप्रोप्रिएट प्रोवाइडर जो टाइप रो इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार AWS रो दरकार कि Azure दरकार कि Google रो दरकार से टाइप हम इंफ्रास्ट्रक्चर चूज करि परिबा ओके सो AWS लो प्रोवाइडर्स विषय राइट जस्ट देखि तुमको बतै दउछि वर्तमान प्रोवाइडर्स तुमको देखो जोडे हम तुमको वर्तमान पढौछि तटा डॉक्यूमेंटेशंस रे केमति पाइब ता विषय में तुमको बतै दउछि तो फर्स्ट थिंग हला हमें लेट्स गो टू दिस वन हमें कोन करबा डॉक्यूमेंटेशंस रे हमें प्रोवाइडर्स दिखा व्हाट इज द प्रोवाइडर्स ओके तो व्हाट इज Terraform जानले राइट documentations intro to Terraform provider use. Okay, so providers. Okay, providers relies on plugins called providers. Then we call it plugins, right? AWS रो छोटो binary file बा plugins stuff. हमें जानचे plugins by गोटे plugins कौन बा program गोटे सब छोटो software, right? जोटा कि हमें use करके हमें connect करेगा गोटे API kind of things, right? So what this provider does. Provider can be installations कराउची provider installations right तामे देखिबा धीरे धीरे ओके तापे हमें देखियो गले provider रो हमें जीवा बरी registry ऊपर ओके it actually provider रो registry हम देखले कोन provider documentations तम अछि provider कोन करछि what providers do so what providers do each provider adds a set of resource type or data source that Terraform can manage. Every resource type is implemented by a provider. Without providers, Terraform cannot manage any kind of infrastructure. Obviously,
because without any connection, right? Interactions, how we'll connect to the any connections, how we can interact with the infrastructure. It's not possible. For that, we need a plugin. We need a software that the provider is. Provider gives us the functionality, the feature to connect to the respective service provider, cloud provider who हमें connect करिया पे, right? तो जेहेतु providers गोटे software हम यूज करछे, plugins यूज करछे, ता भीतर जहा हमको दरकार रिसोर्स हो, जेकोन सी रिसोर्स हमको तर ऑलरेडी कोडे की अछि. Okay, so where the providers come from? The providers are the distributed separately from Terraform itself. So Terraform एटा धोनी, right? किए दोछि ना जो प्लेटफॉर्म, जो सर्विस प्रोवाइडर हमें यूज करिया को जाउचे से प्रोवाइड कर. सपोज AWS is giving that software to be used by the Terraform. The Terraform हिसाब रे कोन करछ ना particularly provide करछन. Provides distributed separately from Terraform itself, and each provider has its own release cadence and version numbers. Okay, so इस हमें तो Terraform registry को जीबा एटी हमें पाइजा प्रोवाइडर डिटेल्स. तो हमें कौन कली देखो 3 tiers रो बेसिकली रहउची, जोटा की ऑफिशियल, पार्टनर, कम्युनिटी. तो हमें ऑफिशियल सिलेक्ट करिवा जोटा की Terraform ऑफिशियल प्रोवाइडर्स से सब कंप्लीट लिस्ट पळे आसीबो. ओके, सेंती AWS, Azure, Kubernetes, Oracle Cloud, बहुत सारा thousands of providers are there. Okay, thousands of providers are there, so we can go ahead and look into that. Okay, so बहुत सारा प्रोवाइडर हम धीरे धीरे जानिबा केमिति तुमे प्रोवाइडर्स जानिबा चाहूछ. तर तमे चाहूछ किछि गोटे प्रोवाइडर सर्च करिवा पई, then you can go ahead and search it here. Suppose GitHub, हमें किछि AWS Cloud Control Console, GitHub, okay, partner providers भितर आसुछि. ये सब पार्टनर प्रोवाइडर्स, कम्युनिटी पार्टनर्स माने जो माने ऑलरेडी पार्टनर Terraform से द पार्टनरशिप रे तांको प्रोवाइडर से सपोर्ट करूचंती, राइट? कम्युनिटी माने जे कोन सी माने यू एंड मी, राइट? आमे जे भीतर सपोज मु गोटे चाहूची गोटे सब छोटो सॉफ्टवेयर बनैची, छोटो प्रोग्राम लिखीची जोटा कि आई कैन यूज इन Terraform टू कनेक्ट टू यूज दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम टू कनेक्ट टू द एनी प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट? किछि भी टूल हम यूज करि परिबा. तो सेते पे हमें एटा यूज करूचे. तो प्रोवाइडर सपोज हम AWS यूज करियर अछि, तर ए पर्टिकुलर रजिस्ट्री को जीवो तार हला registry.terraform.io रे तब कंप्लीटली प्रोवाइडर्स डिटेल्स प्रोवाइडर्स पाई परिबो registry.terraform. तो इट सपोज AWS यूज करियर अछि, मते AWS क्लिक करो. AWS रे कंप्लीट डिटेल्स तो पळे आसीबो. एटा कोन हला ऑफिशियल बाय HashiCorp. So this is been created by HashiCorp. This is the official plugin. This AWS plugin by AWS provider is the official. Okay, and latest version is 6.28. Kuda AWS plugin ro version ta. ये जो AWS provider ro version है 6.28. Okay, तो केमिति हमें ए पर्टिकुलर प्रोवाइडर को यूज करिबा एठी हमें जानि परिबा. जस्ट क्लिक करो, इट दे देछि Terraform 0.13 version, 13 plus version हम यूज करछे. तो रिक्वायर्ड प्रोवाइडर, रिसोर्स आउ को पर्टिकुलर वर्जन आ विषय केमिति तमे वर्जन सिलेक्ट करिवो, केमिति यूज करिवो ता विषय टोटल गोटे क्लास हम नबा, माने हम नेक्स्ट क्लास हम डिस्कशन करिवो. तो मु जस्ट ओवरव्यू बतन दे दोछि प्रोवाइडर केमिति यूज करिवो, केमिति डॉक्यूमेंटेशंस यूज करिवो तमर कंप्लीट कोडिंग करिवा पई, राइट? सब तो दिन से तमे माइंड रे तमे रखि परिबोनी, यू कैन नॉट कीप एवरीथिंग इन योर माइंड, राइट? तो हमें कौन करबा ना डॉक्यूमेंटेशंस फॉलो करबा, एंड यू शुड नो हाउ टू यूज डॉक्यूमेंटेशंस टू राइट योर कोड. तो जहां भी दरकार केमिति तमे डॉक्यूमेंटेशंस रु पाई परिबो, राइट? तो फर्स्ट असले इट यूज प्रोवाइडर क्लिक कलो, तमे केमिति प्रोवाइडर तमे यूज करो तार कंप्लीट कोड भी से दे देछि. टेक दिस वन. ओके, दे गला परे तमे कोन करिवो, प्रोवाइडर पाई गलो. तो बर्तन मु चाहूची ता परे हमें तर resources provider पाइगल. provider होची हम कोन थ्रू यूजिंग दिस प्रोवाइडर विल कनेक्ट टू द environment.
AWS environment, AWS service provider, right? To connect to the AWS, we need this provider. Okay, एटा Terraform versions नहीं गले, तब हमरो provider AWS नहीं गले. Okay, required underscore providers गोटे block जो थरी हमें particular provider version select कर. तुम्हें जो version provider दरकार. Suppose तुम्हें चाहो चो कौन version देखिवा पाएं, ये सब versions जहाँ भी जरा तुम्हें सुन आ गोटे मन रखी दो. तुम्हें जो कंपनी रे काम कोच रियल टाइम रे तुम सब केबे भी लेटेस्ट वर्जन ने काम कर नथिबो. तमरो जो पुराना वर्जन थिबो कंपनी प्रोवाइड करतो, कंपनी आनी थिबो सही वर्जन ही तमे काम करतो. सपोज तमे सिलेक्ट करतो पुराना वर्जन रे काम करतो 6.2 पर बता लेटर 5 पॉइंट समथिंग जे तो जे कोन सी वर्जन देखियो गेल तमे देखि परिबो एटी. ओके, तो सही हिसाब तमे सिलेक्ट करिवो ए पर्टिकुलर ब्लॉक चेंज हे जिवो. ओके, तो सही हिसाब तमे एटी वर्जन सिलेक्ट करिवो. बटन लेटेस्ट वर्जन अछि 6.28. तुम एटा सिलेक्ट कर देली. सपोज तुम जहां भी दरकार 5.28 और 5 point something, then you can use it here. ओके, तुम बते देबी केमती पर्टिकुलर वर्जन्स तुम यूज करिवो तार in a perfect way how you can use the versions. I'll show you. Okay, तो एटा गला प्रोवाइड कला परे तबरा हमें डॉक्यूमेंटेशंस केमती यूज करियो ए पर्टिकुलर AWS प्रोवाइडर. हमें तो Terraform रो डॉक्यूमेंटेशंस देखिले हम बतेली. एबे AWS प्रोवाइडर डॉक्यूमेंटेशंस केमती यूज करियो ना, you can go ahead here and click it. ता पूर्व मु ओवरव्यू क्लिक करछि. ए ओवरव्यू हम जा देखले कंप्लीट डिटेल्स अछि, राइट? डॉक्यूमेंटेशंस से गला. एबे AWS प्रोवाइडर डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीटली आसेला. केमिति यूज करिवो AWS प्रोवाइडर आ कोन तारो रिसोर्सेस. तो ये रिसोर्सेस मन रखता हो आमे कोडा कहबो जे कोन से सर्विस यूज करछे. सपोज EC2 आमे काई के यूज करछे. EC2 इज अ service which we use to create server, right? Instances. EC2 instances, nothing but servers, machines, right? तो ताप सपोज रिसोर्सेस आमे कोन करबा कंप्लीटली देखो ए साइड लेफ्ट साइड बार, राइट? कंप्लीट रिसोर्स डिटेल्स अछि. आमे धीरे धीरे रिसोर्स ऊपर को जिबा. गोटे दिन तुम सब बतै दोनी नले तुम कंफ्यूज हे जिवो. तो जे कोन सी रिसोर्स हमें इठी पाई परिबा. आ केमिति रिसोर्स यूज करिया ता विषय में बतै देबी. ता पूर्व हमें देखि दो AWS प्रोवाइडर ऊपर. तो प्रोवाइडर तुम केमिति यूज करिवो देखो. Terraform 0.13 आउ लेटर रे तुम this way you can use the Terraform. पूरा कंप्लीट दे देछि केमती तमे कोड यूज करिवो, राइट? देखो प्रोवाइडर यूज कलो इति और Terraform तमे यूज करू छ वर्जन्स, राइट? एंटी यूज करे पड़े. देखो Terraform 0.13 and later, तो तमे you need this Terraform block. तो 0.12 आउ पूर्वरु ता पूर्व वर्जन्स देखो एटी किछि आउ ए Terraform रो ब्लॉक दरकार नै. You can directly use the provider block. एटी कोन अछि तीनटा ब्लॉक अछि Terraform block जोटा कि हमें Terraform यूज करू छै बोली ताकू जणाउ छै जे we are using the Terraform with the required provider. ता पे मोटे ब्लॉक और प्रोवाइडर यूज करू छै को वर्जन रो यूज कर छै करछि. आ गोटे प्रोवाइडर ब्लॉक रोछि जोटी केवल स्पेसिफिक कोन तुमको AWS दरकार को रीजन फिजन ता विषय डिटेल्स दोछि. आ गोटे रिसोर्स ब्लॉक अछि और बहुत सारा ब्लॉक्स हमें देखियो धीरे धीरे. ओके, तब एठी केमती यूज करू. तब 0.12 और इयरली रे हमें कोन ए पर्टिकुलर Terraform ब्लॉक हमको दरकार नै. We can directly go ahead and give the versions directly inside the provider itself. Provider भीतर ही हमें दे देला हमें. तबे सब्सक्राइब केमती कोन ऑथेंटिकेट करा होची देखो बहुत बड़ो डॉक्यूमेंटेशंस ता, राइट? तो मु तुमको धीरे धीरे पूरा डॉक्यूमेंट्स तो हमें जीवन तुमको केमती कनेक्ट जहां भी लिखा आइछि जहां भी कराइ छि ना तळे से डिटेल्स हम तुमको बतै देबी. तो फर्स्ट थिंग हला हमें Terraform जेतो इंस्टॉल करि सारी तापरे हमें गोटे छोटो Terraform कॉन्फ़िगरेशंस फाइल लिखिबा जो तरीके हमें हमर कोड यूज करिबा. ओके, सो गाइस बुझी पारलो तो केमती कोन Terraform यूज करिवो. वर्तमान पर्यंत हमें Terraform इंस्टॉलेशंस और प्रोवाइडर विषय जानिले और बहुत सारा अछि प्रोवाइडर कोन कोन रखिए केमती रखिबा ता विषय हमें नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करिबा.